Samaj. I am really happy to say that we have Chander Ahuja ji, our guest today, but Usha will introduce her more. Um, Okay. and we will start the Sandhya first. I'll start with the Gayatri Mantra, then you Yeah, do the. I will do the rest. Yes. Yeah. So I'll do 3 times Gayatri Mantra. Okay. Om Bhur Swaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasadi Mehi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Swaha Swaha. Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasadi Mehi धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Rani, now you can do the sandhya. ॐ शन्नो देवीर्विष्टे आपो भवन्तु पीतयेषयोर्भिस्वस्तिभिस्त्रवन्तु न ॐ वाक् वाक् ॐ प्राण प्राण ॐ चक्षु चक्षु ॐ श्रोतं श्रोतं ॐ नाभि ॐ हृदयम् ॐ कण्ठ ॐ शिरः ॐ बाहुव्यां बलं यशो बलम् ॐ कर्तल्कर्पृष्ठे ॐ भू पुनातु शिरसि ॐ भुवा पुनातु नेत्रयो ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महा पुनातु हृदये ॐ जना पुनातु नाभ्यां ॐ तपा पुनातु पादयो ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र ॐ भू ॐ भुवा ॐ स्वः ॐ महा ॐ जना ॐ तपा ॐ सत्यम् ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधात् पसोदया जायत ततो रावजायत तथा समुद्रो अर्वणा ॐ समुद्रादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधात् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्यवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ प्राचीदि अग्निधिपतिर्लसितो रक्षितादित्या विश्वः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्दरोधिपतिस्शिराशिचिराजिरक्षिता पितर्इष्वः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ प्रतीचिदिगवरुणोऽधिपति प्रदातु रक्षितानमिश्वः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं भोजं वेदद्मः ॐ उदीची दिक्सोमोऽधिपति स्वजो रक्षिता शनिर्शिवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता विरुद ईश्वः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोचं वेदद्मः
Om Udvadig Braspati Ridhipati Shivitro Rakshita Varshamishvat Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshitabhyo Nama Ishubhyo Nama Ebhyo Astu Yo Asman Dveshtiyam Vayam Vishmastam Vojam Vedatmaha Om Adayam Tam Sasparisvaha Pashyant Uttaram Devam Devatra Surya Magnam Jyoti Ruktamam Om Udutyam नहीं, Jat Vedasam हमने Devam. सवेर से लिया ही नहीं, बस जो तुम देकर गए थे वही लिया है। Please mute yourself. Om Udutyam Jat Vedasam Devam Vahanti Ketava Rishe Vishwaye Suryam. Om Chitram Deva Namudgadnikam Chakshurmitrasya Varunasyagyane Apradhava Prithvi Antarikshakam Surya Atma Jagatastu Swaha Om Tat Chakshurdev Hitam Purustash Shukra Pashem Sharada Shatam Jivem Sharada Shatam Shriyam Sharada Shatam Prabhavam Sharada Shatmadina Syam Sharada Shatam Bhuyascha Sharada Shatat Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat He Ishwar Dayanidhe Bhavat Kripya Nen Japopa Sanadhi Karmana Dharmat Kam Mokshanam Sadhya Siddhi Arve Om Namah Shambhavaya Cha Mayo Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Om Shanti Shanti Shanti. Over to you, Usha. Okay. I'm very happy today that Chandraji is going to talk to us about music and how it affects the life. And here is about Chandraji. It all started simply. We will learn music from a well renowned classic music teacher who did her master's from Delhi University under the guidance of top teachers in India. And she sang on All India Radio. We started going to Chandraji's castle home to learn music and learn singing. While we had expected we will learn to sing a song or two, we actually found a friend who taught us not only about music but also life. We learned about music and health. We learned about kindness and compassion. We learned about God and giving. Sitting in her mandir room, Chandaji explained all of this by teaching music and by being just who she is. We call ourselves blessed to have learned music from her and thank her from the bottom of our heart. Chandaji taught us for many years in Skarsha School. uh, Chandraji taught for many years in Scarsdale School. She has been honored by Westchester County extensively in many forums for her singing and philanthropy. Chandraji has selflessly devoted herself to the construction of the Hindu temple in Westchester, where she actively volunteers in singing bhajans and aarti. Chandaji is blessed with two amazing children and four beautiful grandchildren. DPG, who left us a few years back, was one of the pillars of our community. He was the most loving and generous person I have we have known. Together, DPG and Chandaji would welcome all of us to their home on January 1st to start the new year with Hanuman Chalisa and bhajans at their home. Chandaji is an ideal for us, both music and life, and we are very happy today that she will share with us her thought on music and brain health. Chandaji, here you are, and we are fortunate to have you in our life, and we are just looking forward to listening to you more in detail. Thank you. Thank you, Shani, and everybody. Thank you for having me.
I'm just going to talk about my personal experiences, that how the music helped me in a different field, where when I was a teacher and with the special education, and also when I was teaching music at home. And I have seen that I came across with a few patients also like Alzheimer, and also, like dementia and this. So today I'm just going to tell you all my experience. I didn't study much. I'm not a doctor, and I don't know much about the doctor, you think, but I'm going, whatever I have experience, I'm going to talk about that. So just to start with, I just want to tell you that music is the soul, where words are the mind, words for the mind. So I will talk in both Hindi and English. If anybody can understand, please let me know. I will then change into English. So I'm sure all of you know that from where the music came from. The music came actually in there are from the Veda, the Samaved, it was originated from there, when Bhagwan Krishna, he told in the Gita that in I am the Samaved in the Vedas, like Samvedasmi, अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ. सामवेद जो है वो पूरा जो है वो म्यूजिक के ऊपर ही सब उसके अंदर बताया गया है संगीत के लिए. तो I just wanted to tell you that कि music जो है, it keeps our brain very healthy. Whatever age you are, whether you are old or young, or you are healthy or sick, or you are, like any kind of things, all the emotions come in the music. We when we sing, it really helps us. So the music is in all three. Like the definition of music is Geetam, Vadyam and Rhythm. गीत, वाद्य, यंत्र जो आप इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं और साथ में नृत्य करते हैं. तो संगीत का ये जो उद्गम हुआ, ये सामवेद से हुआ. जैसे सामवेद में, सामवेद को छंदोग्य उपनिषद में they have said that it is like a flower, like पुष्प है. तो सामवेद एवं पुष्प, वस्तुतः संगीत की मृदुता पुष्प से किसी भी प्रकार कम नहीं होती है. पुष्प के समान संगीत भी मनुष्य को प्रफुल्लित करता है. It makes you happy and you really come out like a flower. So today I'm going to talk about the topic is that the positivity of music on the brain. Number one, there are few things which really change our brain very well. Like number one is our mood. When we sing, our mood changes. And then it stimulates our memory because we remember the words, we do sing that. And also, and cognitively, it is very, very, very good for us and teaches when you do different languages. Like every person in the world knows music, they come in touch with music, and that is what is. And then later also it also gives a better sleep.
in the night when you listen to the music, and it motivates and it controls your stress, anger, and calms you down. So in my opinion, I want everybody, it's not that being a music teacher or giving, but it is very, very healthy for all of you. Music is very healthy. And please, in your life, it helps you during the pain, especially during COVID time. This was a very good social connection with the people, like you were stressed out at home, sitting locked down, and you have so much pain. Sometimes you are sick, sometimes. So all these things were very, very important, that if you do music, it really helped us. To me, it really helped very, very much, because sitting at home and you are going on Zoom, singing all the time, singing here and there. So please, it gives us happiness. It helps us to reduce our pain. And then also it motivates us to, start learning and be happy in the life. So these are, and also it improves, especially in the old age, when you are getting old, the memory, it sharpens your memory. And also cognitively, when you use some instruments, or it also in the seniors, they have, like a muscle, they are not working for many, many years, so it really helps. So I want all of you to learn something, or you can, whatever way, like in the Vedas we chant Om, and you can even chant Om through meditation and do music, because it's not that you have to have a lot of training in the music. So all these things are very, very important in the positivity of brain. And I have noticed, I want to give you one example, that when I was teaching in the special education, there was one girl who for 5 years did not utter a word. For 5 years. She was in my class, Down syndrome child, and she couldn't utter a single word. What I used to do is that every week I will take my instruments, like I play sitar, I play harmonium, I play tabla. So that week I took my sitar, and it was the 5th year, and after 5 years, because it was a little class, after 5 years they go to the higher school, So I played the tune Baba Black Sheep, because being in here, so I have to have like a Western music, so whatever they like it, So I played that tune Baba Black Sheep. And that girl, after 5 years, she used to talk in the sign language. We were trained, whatever she wants, she will do. The moment I played on my sitar, Baba Black Sheep, and that girl jumped from her chair. And she jumped, and we were 5 teachers in the classroom, because we are speech therapists, social worker, and the other teachers. So that girl jumped, and she spoke the first word after 5 years, more. M-O-R-E, more. I want more. So this I want to, why I gave you this example, that music really touches you. And whenever you do music,
it really touches you, and then we called her parents and we mentioned to them that she loves music. So when she goes to the higher school, please make sure that she goes in a school where they have music. And that after 11 years, I got the parents called the director and mentioned that that girl is now singing so well, because after, like she was, we were all in tears, look, what is the effect of the music. And you will see whenever you sing, you experience in your life, whenever we sing music, we feel very good. Yeah, I have experienced it with me also. Whenever I have some body ache or this, I sing certain raga or I sing or play, I feel much better. So to me, it's a really very, very good and nice for all of us, to sing something. And we all are have we have a club which Jitender ji owns, that Besura club, and we sing, and we all feel so good and happy and socialize and do all these things. So this is what I wanted to tell you, that this why it really touches your brain, and you feel really good when you sing or play or dance. When you are happy, you dance. All these three is music, whatever way you want to do. It's not that you have to have the classical music. Yes, of course, if you are learning, that is very, very nice. But you can chant, you can chant Om with the meditation. That is music, chanting of Om, and it's like a yoga. It's like music is yoga itself. It is yoga, because in music when we sing, we have to breathe. And in yoga, the breathing is pranayama is very, very important. And in music also, breathing is very important. When you are singing, it's the breath. If you don't breathe in between, and the song will then like this kind of sound will come. So you have to breathe and then sing the next word, breathe and sing the next word. Like in the sargam, when we sing sargam in the raga. So you can do Om practice every day, just for 10-15 minutes, and you see the difference, how well it is. It will really, really be very, very nice feeling to you, and you will feel so good and feel very fresh and the same. So and another example I want to tell you, that I went and gave a little music performance in two of the nursing homes, one in Bronx and one there. And they have never seen our Indian instrument, like I took harmonium, sitar. They were just kissing my hands when I played something on the sitar. They were so happy. The elderly people, they were so happy, uh, and they felt very good. And another nursing home, when I went there, when I played some tune, I didn't know there was one woman. I will not disclose her name. She started singing raga, what I played on the harmonium, and they were all
so surprised that how come she knows. Then later I found out that she has an Alzheimer, and she's in that nursing home because of that. And because she used to do a lot of music in her life, which she never, after her sickness or living in the nursing home, this was time someone came, played a harmonium, a Raga Bhairavi, and she started singing the Raga Bhairavi there. So it really helps. It really helps if you can, you see that. So I think this is what I was trying to tell you, my personal experience, what music does to me. And I have been teaching music here for the past almost 40 years now. And also outside USA, a lot of places, wherever I used to, my husband used to get transfer, I will teach music there, because other countries there were not many teachers. Here we have a lot of teachers, and I'm very, very happy that uh, we have now a lot of. When I moved to Chester, I was the first teacher in here, so I had quite a few students, and a lot of them wanted to learn classical music a lot, and they were all doctors. A lot of them were doctors in the beginning. Why they wanted to learn? They say, we have so much stress in our profession, and we just want to learn this. That take one rag and teach us, and the alap, and do like this. So I will request everybody to please do whatever music you can do. It's not that you have to go classical or you have to play instrument, whatever, like you can do own chanting, you can do bathroom singing, but sing. It will really change you. It will make you happy when you are sad, or you have any kind of emotion you have. So it will really help you. And then also, I just wanted to, after this, I wanted to tell, which Rakesh ji asked me to talk about little bit of the ragas, I I just want to tell you that all our music have two kinds of music in India. One is Carnatic music and one is North Indian music, Hindustani music they call. So I teach Hindustani music, but base is their techniques are little different. A lot of things are similar. So in our music, Indian music, we have 10 scales. Whatever you sing, whether you're singing bhajan, geet, ghazal, or mantras or whatever, all these things are based on these 10 scales. There is a rag behind. Nothing is without raga. Nothing is without raga. So there are 10 important melas, they call in Carnatic music, but in Hindustani they call that. So the thoughts are a lot of thoughts. You must have heard the names Bhairavi, Kalyan, Bilawa, Marwa, or Khamaj, So we have 10 thoughts. So those 10 thoughts I just said, like Asavari, all these 10 thoughts, anything you sing are based on these 10 thoughts. And these 10 thoughts have 7 notes. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni. That's it. Sa is 1. Like sa and pa are the key notes. But the other re, ga, ma, da, and ni, they have 2 varieties.
Like there are two re, two ga, two ma, two dha, two ni. Sa and pa are achal swar. They are called achal swar. They are fixed. You can't change. Any place in the harmonium or in any instruments, wherever you play the sa, the next note has to be re. And which re? The first re. And then the next re. There are two rays, one after another. So that is little from the sa, you go little bit, it will be komal. Komal re, we can say. Komal And the next will be tribra re or shuddha re. So the same way, when comes after re ga, tu ga. Ga komal, ga shuddha or tibra. Then comes ma, tu ma. So two ma are ma shuddha and ma tibra. This is the only note in our Hindustani music that ma it has opposite, like shuddha comes first, which is also known as komal, but ma tibra comes next, which lot of you must have heard rag kalyan. So kalyan has this ma tibra, tika, while like ma has a sign of a straight line on top of the note. That's how you recognize ma tibra. So they say ना माँ जो होती है दो तरह की होती है, एक सख्त होती है और एक कोमल होती है. So that's how in the music we have two ma, like ma komal and ma तीव्र, तीखी. डंडा लिया हुआ होता है उसने ऊपर अपने, उसका साइन है. बट माँ कोमल जो है, शी इज प्योर, शी इज वेरी वेरी काइंड एंड जेंटल. सो एंड देन कम्स पा. सो पा मैंने बोला एक ही है. Sa and pa, those are the two. The first one, sa, is the beginning of the scale, and pa is the middle, and then the next part of the scale goes like dha to dha. Dha komal, dha shuddha, then ni komal, ni shuddha, and then octave is finished. Sa, re, ga, ma, pa, da, tha. So today, what I'm going to do, that I'm going to show you a little bit on this, right? We are, how these notes are played and sung. I will, so, and then I'm going to give you some example of the songs which you already know, but you don't know the raga. What raga is this? Like there, so the first scale is Bilawal. Bilawal has all regular, should the note, pure, like goes like So ये आपका पहला थाट है, first. No मिलावट, only शुद्ध and pure. The next comes राग कल्याण. So कल्याण में क्या है? माँ तीव्र, डंडे वाला माँ. Like sign, अगर आप कहीं भी म्यूजिक की किताब देखी है, उस पे ऊपर लाइन होती है, so वो तीव्र माँ है. And पहला था सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा रे सा. तो इसमें माँ तीव्र आता है. तो भैरव, भैरव में
रे एंड ध कोमल आता है आपका. सो भैरव में रे और ढ कोमल आता है. फिर उसके बाद आता है आपका खमाज. खमाज में क्या है, सिर्फ नी जो है वो कोमल है, बाकी सभी शुद्ध सुर हैं. इसमें आपने आपका जो बहुत फेमस भजन आपने सुना है नरसिंह मेहता का, वैष्णव वैष्णव जन उपकार करे तो ये खमाज ठाट से है, ये भजन निकला है. सो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे गाने जो हैं आपको सबको आते हैं, आप गाते रहते हैं. मैंने हवन में भी सुना है, वैसे भी सुना है, लेकिन आपको उनके रागों के बारे में अगर थोड़ा सा आपको ज्ञान मिल जाता है तो आप और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे उसको सुनने में. उस आप जी. फिर अब नेक्स्ट जो है आपका है असली ठाट में क्या है, ग ध नी तीनों ही कोमल लगते हैं, बाकी सारे शुद्ध. इसमें क्या कह रही हो, समझ तो आए बात. Please mute yourself. बीच में I don't know. The last few weeks. Do we have any progress towards? Host can mute them. You know, I can't mute them. We did not confirm that yet. No, what we were going to do was put some of that back. Rani ji, who's speaking? I can. No, I think it's you will see who is not muted. Can you mute them, please? Jugnu, yeah, they are okay. Now they are muted. Okay. Maybe give her another week. Okay. And Bob, if you're available. One. Thank you. अब असवरी ठाट में है आपका बहुत ये जो असवरी ठाट से जो राग निकलता है वो आपका दरबारी कांडरा को जाता है. दरबारी कांडरा में आपने बहुत सुना होगा वो वाला So always
So ये असबरी थाट से इसका एग्जाम्पल होता है, या जनक जनक तोरी माजे पायलिया, के तीर सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी माजे पायलिया। So इसमें ये हो जाता है। अब खमाज से जो है वो आपका देश राग भी आता है। देश जो है आपके क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इस वक्त का। और ये भी आपको बताना है कि हमारे जितने भी ये राग हैं इनका टाइम भी होता है कि ये किस वक्त ये गाए जाए। और जिस वक्त का वो टाइम का जो राग होता है अगर पता होए तो उस वक्त उसका वाइब्रेशन, उसके भाव वो हमारे माइंड के ऊपर बहुत इफेक्ट भी करते हैं। अगर वो टाइम का, अगर मैं भैरव गाती हूँ इस वक्त, भैरव का टाइम है सुबह 4 से 6 बजे तक का, सुबह अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, जागो मोहन प्यारे, उसका तो बंदिश भी वही है। तो अगर मैं शाम को गाऊंगी तो उसका इफेक्ट नहीं उतना अच्छा आता है, क्यों, वो आपको अजीब सा लगेगा। अब इस वक्त कल्याण का टाइम है, कल्याण के राग गाए जाते हैं, या आपके काफी है, जैसे काफी में क्या है, उसमें ग और नी कोमल है, सो काफी में क्या है, फागुन के जितने आपके होली के गाने आते हैं वो सब काफी राग के अंदर आते हैं। उसमें आज खेलो शाम संग होरी, इससे ये काफी के अंदर ऐसे आ जाते हैं। और फिर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो लास्ट का थाट मैं बता रही हूँ, वो है भैरवी। भैरवी को बोलते हैं एवरग्रीन। कभी भी आप उस राग को आप कभी भी गा सकते हैं, लेकिन ये एक हमारे म्यूजिक में रूल है कि आफ्टर भैरवी यू कैन सिंग एनी, इफ यू आर सिंगिंग द प्रॉपर रागा then you cannot sing any other rag. But आप भजन गा रहे हैं कोई बात नहीं है, भजन तो किस भजन गा रहे हैं या गीत गा रहे हैं या गजल गा रहे हैं या ठुमरी गा रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर भैरवी गाओ, क्योंकि इन सब में तो काफी सारे सुर इधर उधर के राग लगा करके भी गाए जा सकते हैं, लेकिन मेन जो उसमें होता है वो भैरवी होता है। तो ये थोड़ा आपको मैंने म्यूजिक के बारे में बताया है। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या पूछना है, आप प्लीज आप कह सकते हैं, आप पूछिए आप। चंदर जी, एक क्वेश्चन मेरा है जी बोलिए। कि ये तो आपने सारे गामा पा ये बताए, तो अब यहाँ के वेस्टर्न म्यूजिक में भी वही राग होते हैं या अलग होते हैं? अगर आप उनको ध्यान से सुनिए तो म्यूजिक तो वही है, लेकिन वेस्टर्न में ये क्या है कि जैसे हमारा है ना, उनके स्केल्स, उनके नाम डिफरेंट हैं, एंड समटाइम दे are different in our ragas. वो पेंटाटोनिक स्केल होता है और ये स्केल होता है, वो स्केल होता है। तो उनका क्या है, if you study well, if you go into that theory of the western music के scales में, आप पहचान सकते हैं कि ये राग काफी है, ये बिलावल है, ये
कल्याण है और ये दरबारी है, या मीन आप वो स्केल पहचान सकते हैं. यस, डेफिनेटली. बिकॉज क्या है कि हर म्यूजिक में देर इज देर आर नोट्स एंड यू कैन रियली study and see what are those. पर वो वही होते हैं, सेम नोट्स तो हर जगह सेम ही चलेंगे, लेकिन उनका टेक्निक डिफरेंट थोड़ा होगा. हमारे 7 सुर या 12 सुर हैं या इस तरह है, उनका कुछ और सिस्टम चलता है. बट दैट यू हैव टू रियली स्टडी दैट थ्योरी उनकी. जी, वो पेंटाटोनिक स्केल और ये स्केल, और हमारा जो कल्याण में है वो उनका जो पेंटाटोनिक स्केल है वो उनका वही सेम है. मैंने कुछ स्टडी किया था इनके स्केल के बारे में, लेकिन वो मेरे पास थ्योरी में लिखा हुआ है कि कौन सा स्केल जो है, कौन सा राग है हमारा. अच्छा. पर अगर आप ध्यान से उनकी ट्यून सुने, कोई भी उनका गाना अगर आप सुने ध्यान से, आप पहचान सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है वो वाला गाना की ट्यून है, अगर आप उसको ध्यान से सुने. जी, थैंक यू. पूनम जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है. आई थिंक शी हैज अ जी. क्वेश्चन. हाँ जी. जी नमस्ते चंद्र जी, नमस्कार जी. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल. आप बताइए. अच्छा, हमें आपसे एक प्रश्न पूछना था. हाँ जी, पूछिए. वेस्टर्न म्यूजिक में जहां तक हमने सुना है, बहुत ज्यादा म्यूजिक का ज्ञान नहीं रखते हम, लेकिन क्या वेस्टर्न में हमें ऐसा तो नहीं लगता कि राग नाम की कोई चीज होता है? उनके राग नहीं, उनको मेलोडीज बोलते हैं. मेलोडीज होती है उनकी. हाँ जी. लेकिन क्या उतनी क्लासिफिकेशंस हैं जिस तरह से हमारी हैं? और क्या वेस्टर्न म्यूजिक में उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज और उतने, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो जोड़ तोड़ करते हैं हम लोग में, जब जुगलबंदी होती है या सवाल जवाब होते हैं, क्योंकि हम डांस करते थे तो हम लोग के तबला और उसमें होते थे. वो उनके नहीं होता, बिकॉज हमारे इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती है. इम्प्रोवाइजेशन, यस, दैट्स द वर्ड. फ्रीडम है हमें, तो हम कहीं के कहीं नोट्स लेकर के चले जाते हैं, लेकिन उनका सेट है. तो हम लोग में क्रिएटिविटी ज्यादा है. यस यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा है. क्रिएटिविटी और इमोशंस भी आ जाते हैं, हम करते हैं, लेकिन उनके वहाँ वैसा नहीं है. हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये सब है. बहुत बहुत क्रिएटिविटी है और इम्प्रोवाइजेशन बहुत करते हैं हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे. हम लोग तो जो एनिमी नोट होता है उसको भी हम उठा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, मैच करके. अच्छा, एक चीज और आपसे पूछनी थी हमें, जो हम बहुत जमाने से सोच रहे हैं. एक गाना है हम लोग का 64 का गाना, आपको याद होगा, खेलो ना मेरे दिल से मेरे साजना, हकीकत फिल्म का था. खेलो ना मेरे दिल से, ये गाना हुआ करता था. उसके बाद हमने वो गाना सुना, आई थिंक इट वाज द बीट बॉयज और सम बॉयज, कुछ तो भी बॉय बैंड था, क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माय हार्ट. वो हमने काफी देर के बाद अमेरिका आके सुना. और खेलो ना तो जब हम 8वीं में पढ़ते थे, 7वीं में तब की है वो पिक्चर. तो हमें लगा वो ट्यून और वर्ड्स उठाए हुए हैं. नहीं, ऐसे कई आपको कई मिलेंगे, क्योंकि जब वो बोलता है खेलो ना मेरे दिल से, इट्स क्विट प्लेइंग गेम्स विथ माय हार्ट, या बिल्कुल ट्यून भी सेम है उसका. बिल्कुल करते हैं, ऐसा होता है जी. बहुत आपको कई मिलेंगे, ऐसे लगेगा कि. एंड ऑल्सो सम ऑफ द इटालियन म्यूजिक के भी कई एक जो हैं वो हमारे इंडियन में उसको ले आते हैं, उनके राग के हिसाब से अपना राग में गाना बना देते हैं. ऐसा तो बहुत चलता है. ये तो चलता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते. ये आई थिंक ये किसने किया था, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा, जो मोजार्ट पे किया था. एक हिंदी का गाना है, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा,
कि मैं एक बादल आवारा. People must be remembering that song. Yeah. That Yes. is picked up from Mozart, It's adapted from Mozart. Actually. Adopted from कि Mozart. हम लोग बहुत सारी चीजें उसको adoption बोलते हैं, inspired बोलते हैं, whatever they say. बिल्कुल, वो अपना ट्यून बना उसको जी जी. में ले जा करके और वो ट्यून कर लेते हैं, ऐसा होता है. Inspiration ले लेते हैं. Yes, yes. So because हमारे म्यूजिक में फ्रीडम है इस चीज के कि आप as long as you are under your laws कि हमारा इंडियन म्यूजिक के उसमें रहना है, you know, but you can really do this. अब जैसे अब और कई एक ऐसे भी हैं जो हमारे इंडियन म्यूजिक के इंग्लिश में भी वो वेस्टर्न म्यूजिक में भी करते हैं, वो उनके ट्यूने मैंने सुनी है वो भी. तो ये तो चलता है. लेकिन कई एक जगह पे आपने पढ़ा भी होगा कि किसी की ट्यून आप नहीं ले सकते हैं, आपको वो क्या. बट in this, you know, like लाइफ में हम लोग कभी भी किसी की ट्यून को बता के तो आप ले सकते हैं उसको अपने उसमें बनाने के लिए. वर्ड्स अगर आपके पास है, आप उसको किसी और आर्टिस्ट की ट्यून ले करके और वही ट्यून कर दें, वही राग अपना नहीं वो कंपोज करें, तो वो कर सकते हैं. आप कर सकते हैं जी. हाँ जी. तो ये तो अलाउड ही है, एक तरह से अलाउड है. हाँ जी. वैसे कितना कमाल है कि सिर्फ 8-7 सुरों से हम लोग आज तक नए के नए ट्यून्स निकाल के आ रहे हैं. इतना मिलियंस ऑफ रागस आप बना सकते हैं. आप एक थाट से इतने राग बना सकते हैं, क्योंकि आज टाइम इतना थोड़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि यू नो लाइक जैसे असावरी थाट में कितने आप गाने कितने राग वो कर सकते हैं. जैसे अब कल्याण में है, कल्याण में आप अगर आप दोनों माँ लगाते हैं तो केदार बन जाता है, केदार और फिर बिहाग उसके अंदर आ जाते, कितने राग बन जाते हैं. आप मिक्स एंड मैच, अभी रिसेंटली काफी आर्टिस्ट लोगों ने नए नए राग बनाए हैं, लेकिन हमारे उनका बेस यही 10 थाट है. इससे बाहर आप नहीं जा सकते और ना ही आप अपनी कुछ कर सकते हैं. जो भातखंडे जी ने हमें दिए हैं, जो थियरी में दिए हैं 10 थाट, उन्हीं के अंदर आप रह सकते हैं. अब जैसे कल्याण में है, केदार है, जैसे अब ये कल्याण में तब ये राग केदार बन गया, लेकिन थाट इसका फैमिली जो है, इसका हेड फादर जो है वो कल्याण है. कल्याण में मिक्स एंड मैच करके दोनों माँ लगा करके ये राग बना दिया है. तो यू कैन डू, लेकिन उनका जरूर फादर का नाम जरूर होना चाहिए कि ये किस फैमिली से आया है, किस थाट से आया. ये हमारा सारा संगीत जो है 10 ही थाट्स के ऊपर ही बेस्ड है हमारा. तो इसलिए वो बहुत जरूरी है, और उसके बगैर हम कहीं नहीं जा सकते हैं. वही मिक्स एंड मैच करके आप ये बताइए कि आपने कौन से थाट से इसको लिया. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. दैट इज वाई हमें ये 10 थाट जो है हमें वो करना है. तो, हाँ जी. Anybody has any more questions? I hope मैंने एक्सप्लेन ठीक तरह से किया हो. पॉजिटिविटी ऑफ
on the brain, because बहुत आप देखें तो बहुत इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन के ऊपर म्यूजिक। अगर आप ध्यान से इसको रोज 10-15 जब भी मन करे, कुछ भी आपका मन करे, आप गा सकते हैं। It really affects, it really helps us. सुंदर जी, आपने 6 मैंने I could only get 6 start, आपने 10 सारे बताए हैं जी। 10 का नाम मैं बताती हूँ। अच्छा, कल्याण भैरव बताया है, और आपको बिलावल, कल्याण, भैरव, खमाज, असवारी, असावरी एंड काफी, then भैरवी, then पूर्वी and मारवा and तोड़ी। पूर्वी, मारवा, तोड़ी। तोड़िया। अब पूर्वी जो है वो उसको शाम का भैरव बोलते हैं। जब भैरव सुबह होता है तो इस वक्त संध्या समय जो होता है वो पूर्वी को गाया जाता है। उसका टाइम इस वक्त का है पूर्वी का, तो उसको शाम का भैरव भी बोल देते हैं नाम से। तो ये 10 थाट हमारे पूरे संगीत में बहुत इम्पोर्टेंट। जितना भी आप गाते हैं, जो भी आप गाते हैं, ये सब का सब जो है इन्हीं 10 थाटों के अंदर आता है। Very nice. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा। Thank you. It was very interesting. Yeah. Anybody advance? I hope everybody understood. You know, I only spoke with my personal thing, you know. आपको नहीं, वो आपने नर्सिंग होम का आपने कहा था ना, तो नर्सिंग होम में तो मैं काम भी करती थी, तो they have music therapy for patients who are with depression, dementia with depression or anxiety, and you know, it's very helpful. Yeah, very because helpful. I used to go to this Spring Road, that nursing home, Spring हाईवे के ऊपर जो है नर्सिंग होम, वहाँ पे मैं जाया करती थी। एंड आई हैड they were having inspection, you know, like a health ministry से लोग आए हुए थे। and the one time I took my instruments. They said you should bring this every मैंने अमेरिकन नेशनल एंथम बजाया। उसमें 3-4 जो रेजिडेंट्स थे वो वेटरन्स काइंड के लोग थे, तो वो खड़े हो गए और उन्होंने एकदम से उनको इतना अच्छा लगा कि कोई हारमोनियम पे नेशनल एंथम अमेरिकन बजा रहा है। सो और इतना खुशी मिलती थी उनको देख के। एंड आई ऑल्सो टुक वन टाइम फॉर द सीनियर्स तबला। जैसे कि मैंने 16 बीट तबले पे बजाई, एंड वो लोग उनके हाथ उठे, एंड देन दे स्टार्टेड क्लैपिंग। किसी का हाथ बेचारे का टेढ़ा था, किसी का कुछ था, बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ यू नो, किसी को कुछ बीमारी थी, किसी को कुछ। सो दे स्टार्टेड। मैंने बोला कि देखो आप ये 16 टाइम काउंट करो मेरे साथ। सो जैसे ही मैंने बजाया, सो तो वो ऐसे करके और वो उसमें कर रहे हैं। बिकॉज rhythm is also very important. Very therapeutic. हम कई बार ये कह देते हैं कि आजकल हमारी लाइफ जो है सुर और ताल में नहीं चल रही है। It means कि हमारी लाइफ के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। That is the meaning is सुर एंड ताल। क्योंकि ताल जो है वो हमें बैलेंस सिखाता है, लाइफ के अंदर बैलेंस। एंड बैलेंस फॉर द ब्रेन इज ऑल्सो व्हेन इट कोऑर्डिनेट्स, यू नो, लाइक आपका चलना और सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुर एंड ताल दोनों ही, एंड स्पेशली ताल। हमारे गुरु कहा करते थे कि तुम बेटा सुर से बेसुरे हो जाओ, आई डोंट माइंड, लेकिन ताल से बेताले मत होना लाइफ में। ऐसे बोलते थे कि
ताल से बाहर मत जाइए, क्योंकि ताल आपका, जब आप चलती हैं, आप घर में जब आती हैं, आप एक रिदम में आ रही हैं, 3 ताल में आ रही हैं, फुट उठाती हैं वैसे। अगर तो कभी 1 फुट वैसे कर दें, 1 फुट कैसे चलने लगे, दैट मीन्स यू आर अनबैलेंस। जैसे हम योगा में भी बैलेंस की एक्सरसाइज, तो म्यूजिक में भी वही है। म्यूजिक इज ऑल्सो सुर एंड ताल, एंड ताल इज फर्स्ट देन सुर। सुर को तो आप कर लेंगे, सुरीला बना लेंगे, प्रैक्टिस करके कर लेंगे, लेकिन ताल अगर लाइफ में एक बार इन द बिगिनिंग आपकी बीट खराब हो गई, तो आपका सब कोई म्यूजिक ठीक नहीं आएगा। ताल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द म्यूजिक चंदर जी, लाइफ में। हाँ जी, हमें ऐसा लगता है जो लोग बहुत खुश होकर जब चलते हैं, हाँ, जो बहुत खुश होते हैं जब वो चल रहे होते हैं, वो सब कहरवा ताल में चल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं लगता आपको? या तो द्रुत 3 ताल में या कहरवा ताल में। मैं आपको सुनाती हूँ। और दूसरी बात हमें आपसे ये बतानी थी, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, 1990s में, मिडिल 1990s में, I think it was in Columbia University, yeah, NYU, I don't remember. Dr. Mehmet Oz was doing a research on the effect of music on the healing of post-op cardiac surgery. जी, मुझे हम मालूम है। नर्सिंग स्कूल में पढ़ते थे, अब हमें याद नहीं है वो, बिकॉज हम लोग ने उसका कुछ स्टडी देखा भी था। जी नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये भूल गई हूँ आपको एग्जाम्पल देना डॉक्टर ऑज का, बिकॉज डॉक्टर ऑज मेरे घर पे भी आए थे, मैंने सितार भी बजाई थी, और मेरे हस्बैंड की हार्ट सर्जरी उन्होंने की थी, एंड एनी टाइम ही विल डू एनी सर्जरी, ही विल चैंट ओम every time he will play. And वो उन्होंने जब वो घर पे आए थे, तो मैंने सितार बजा करके उन्होंने सितार का भी वो किया। That is आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। He used to do like that. क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया था, उस पर कर रहे थे कि हाउ मच टाइम लेस इट टेक्स, हॉस्पिटल स्टे कितना कम हो जाता है पोस्ट ऑप पेशेंट्स का, वो कुछ उस पर रिसर्च कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मैंने 1-2 और हॉस्पिटल में या NYU में भी, वहां पर एक जापानीज वुमेन है, वो भी इसी तरह की रिसर्च कर रहे हैं कि म्यूजिक का पेशेंट के ऊपर क्या असर होता है। एंड आई एम ऑल्सो लिटिल बिट, मैंने भी किया है, और भी करने के लिए तो कोविड का वो हुआ तो स्टॉप कर दिया है, क्योंकि हमारे सर्टन रागस हैं जो अभी रिसेंटली कैलकाटा में एक पेशेंट थी, जो बेचारी पता नहीं कितने साल से दिमाग उनका वो हो रहा था, वो एकदम से कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं कर, उनके सामने उन्होंने एक म्यूजिशियन ने दरबारी कांड्रा बजाया, वो बोलते हैं वो उठ बैठी, उस एकदम से उसके दिमाग को ऐसा अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं जितेंद्र जी, तो जानते हैं ऋत्विक, आज वो आया भी था मेरे घर, एंड सो वो न्यूरो एंड उसके ऊपर म्यूजिक वो कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, कि वो बोलता है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा राग कौन से पेशेंट के ऊपर चलता है। Very nice, very nice. There is a lot going, when I was working with the special education, I worked for 21 years in here. तो उसमें मैं हर बारी कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाती थी, बिकॉज आई प्ले 5 इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ ना कुछ लेके जाती थी, किसी ना किसी को किसी का असर हो जाता था उसमें। And even if you play their tunes, their nursery rhymes,
सब चलता है, बहुत हो रहा है। एंड NYU से हमें म्यूजिक थेरेपी के लिए ट्रेनिंग देने के लिए भी आए थे स्कूल के अंदर, कि आप ऐसे 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 करो और देखो ये कैसे होता है। सो देयर इज सो मच गोइंग एंड इट इज ट्रू, इट रियली पॉजिटिव इफेक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है म्यूजिक का। थैंक यू सो मच। और हमारा तो हिंदुस्तानी म्यूजिक तो इतना अच्छा है, जिसको कहते हैं ना सूदिंग काइंड, लेके क्योंकि हम उसकी लैंग्वेज और शब्द ये सब हम लोग और हमारे वेदों से आया है। क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें तो ऋचाएं हैं, राइट, लेकिन ऋचाएं तो ऐसे मंत्र टाइप से ऐसे बोलते हैं ना जैसे, लेकिन सामवेद उसको सामगान में चेंज करके और तभी उसी गाते हैं। इसीलिए मंत्र जो है जब उनके साथ सामगान हो जाता है, सामवेद से वो स्वर का उसके साथ मिलन होता है, तो वो देखिए कितने अच्छे मंत्र, कितने ब्यूटीफुल चैंट करते हैं, कितना हमारे हवन और यज्ञ में होता है। तो इसलिए बहुत इसका असर बहुत बहुत ही पड़ रहा है आजकल, खासकर स्पेशली जिस तरीके से 2-2.5 साल से हम लोग कोविड के उसमें वो हुए हैं। इट्स रियली अफेक्टिंग। मैंने ज्यादा आपका टाइम ले लिया आज। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात, आपने ताल की बात करी थी। I don't know how many have heard the saying नादाधीनम जगत सर्वम। क्या बोल आपने, फिर बोलिए। नादाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत नाद के अधीन चलता है, रिदम के अधीन चलता है। हाँ ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी, लेकिन मैं आपको बता रही थी ना, आपने कहा कि जब हम खुश होते हैं तो हम कहरवा में चलते ये हमारे मानना है। तो कहरवा में जाते ये कहरवा के बोल ये है, और 3 ताल है। जब आप स्मूथ चलते हैं, धा दिन दिन धा दिन दिन धा, और जब दिन दिन और अगर किसी को भगाना हो तो करते धा दिन दिन ना धा दिन तब वो आप दादरा नहीं, दिस इज 3 ताल। हाँ, ये 3 ताल कथक में बहुत जाते हैं ताल में। कहरवा और 3 ताल और दादरा बहुत चलती है कथक। हाँ, दादरा में है तो धा दिन ना धा दिन। अच्छा, okay, Bhabiji, we are it's Bhabiji, I think we are a little over time, and शांति पाठ करना है। चंद्र जी कर दें आप? हाँ जी, शांति पाठ आप कर दीजिए। हाँ, शांति पाठ तो हारमोनियम जैसे मंदिर में करती हूँ वैसे कर दूँ। हाँ, ठीक है, शांति पाठ। हाँ जी, क्योंकि मैं वो गायत्री मंत्र भी पढ़ती हूँ साथ में, मैं एक बारी वो पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति
Om Shanti 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 Om Shanti Antariksham Shanti Prithvi Shanti Shanti Doshaya Shanti Vanaspataya Shanti Vishvedeva Shanti Brahma Shanti Saharam Shanti 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 Sama Shanti Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so बहुत much. बहुत धन्यवाद Thank you. चंद्र जी. Thank you very very much. Thank you. Thank you so much. I hope सबको ठीक लगा हो. जितेंद्र जी ने आज बहुत कोई question नहीं पूछा है. जी. Thank you. Thank you very much, Chander. Thank you, Chandra. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Usha ji, for Namaste. Thank you, everyone. And Namaskar ji. Thank you so Okay. much. Thank Thank you. Thank you. you. Okay.